Hello and Namaskar. A very warm welcome to the first episode of FlexiSTRONG Talks in 2022. So friends, our very special guest for the evening is Dr. Rahul Jain. Dr. Rahul Jain is MBBS, MD Internal Medicine and Postgraduate Diploma in Diabetes from Cardiff University, UK. A tumor in the left knee resulted in amputation of his limb and crutches became part of his life. Having gone through the pain himself, he understands the pain and emotions that a patient goes through. Seeing his patient smile makes him smile. So friends, please join me and welcome Dr. Rahul Jain. Namaskar. Thank you for having me here. And today we'll be talking about a very important topic, which is lifestyle and diabetes. Now, we all know that lifestyle plays a very important part in many diseases that we encounter in day-to-day life in our modern society. And I'm thankful to Shyam for organizing this very nice initiative and this wonderful program, which will enlighten us on lifestyle disease and how diabetes impacts us. So, before I start, let us dwell very briefly on what lifestyle disease actually is about. Now, lifestyle disease is a set of diseases which we call non-communicable disease. And non-communicable disease is something which happens not because of infectious agents, but because of problems which happen because of the complex interaction between our genetic makeup and the environment around us. And broadly, lifestyle diseases or non-communicable diseases can be, the common lifestyle diseases which we encounter are type 2 diabetes, obesity, high blood pressure, ischemic heart disease, which can lead on to heart attacks, cerebrovascular diseases which can lead to strokes, primary infertility, fatty liver disease, high blood cholesterol levels, polycystic ovarian disease. So you have an entire gamut of what we call non-communicable or lifestyle diseases, and we will talk about them with primary focus on diabetes. So why is diabetes so important? Diabetes is important because it is one of the leading causes of many ailments which plague the normal society, and in turn lead to excess amount of cardiovascular mortality. They cause premature deaths, and they cost a lot of money, not only for the individual but also for the public exchequer. Huge number of man hours are lost every year because of the scourge of diabetes and its associated brethren. And diabetes contributes very largely to heart attacks and strokes, kidney failure, which is also part and parcel of advanced diabetic disease. Diabetes can lead to retinal problems, which can lead to blindness if not treated and diagnosed early. And generally patients have this thing in mind that, okay, I have a diabetes of 15 years duration now, no matter how badly my diabetes is, if I control my blood sugar levels, these problems will revert, but that does not happen in clinical practice. And diabetes is one of those diseases which is known to be, the problems it causes is irreversible, and this is why we need to dwell some time on how we can prevent and how we can at least alleviate or mitigate the problems that people face because of long-standing diabetes mellitus. So, having said this, let us burst a few myths on what diabetes is. Some of the common myths that we hear about diabetes is that diabetes is only due to genes. It's only partly correct. And when people are advised insulin, they feel, oh, that's the end of the world now. I have been prescribed insulin and this is apocalypse. I will soon have kidney failure, and insulin means it's tata bye bye for me, curtains for me. That's not true at all. And there are many people who are profound believers in the fact that only exercise and diet is enough for diabetes. Well, again, it's partly true. While we do know that regular exercise and diet are very important, in fact they are the cornerstones of diabetes, but they are not the be all and the end all of treatment of diabetes. Diabetes also requires people to do a lot of things, including control their blood sugars,
control the blood pressure, control the cholesterol levels, and whatever it takes for your doctor, your treating physician to treat diabetes and its associated complications. I mentioned blood pressure, I mentioned high cholesterol levels, I mentioned kidney failure. Whatever it needs, you have to take medicines so that you can prevent and offset and mitigate some of the complications which happen because of type 2 diabetes. And again, there's this misconception that if I control my blood sugar, that is all that there is to diabetes. It can't be any further from the truth, because as we will discuss a little later in this event, that controlling blood sugar is just one of the aspects of managing a complex disease like diabetes. Diabetes is very multifaceted and it involves literally and virtually every organ in the human body, which is why it is so important for us to pay attention to the various complications that type 2 diabetes can have. So this is a very interesting picture that I show in many of the talks that I give. I talk about the common soil. The common soil. What is the common soil? Well, if you look at a tree, if you examine a tree, you will see that a tree grows from it has to have a fertile soil to grow. What does a young sapling need when it wants to become a tall, majestic banyan tree? It will first need some appropriate soil which is amenable for its growth. It will need water, it will need sunlight, and once it starts growing, what does a tree look like? It has branches, it has a thick trunk, it has got leaves, it has got flowers, it's got buds, it's got fruits. So the entire gamut of things in a tree are there in type 2 diabetes as well. Now, when we talk about the concept of common soil, the fertile soil which allows a tree to grow. What is the fertile soil which allows the unholy tree of diabetes and its friends to grow? Well, the short answer is something which we call insulin resistance. What is insulin resistance? Basically, insulin is a very important hormone in the body, and it not only controls blood sugar, it also controls the cellular growth of many different tissues in the body. And if it does not work properly, it causes lots of problems, like it causes heart attacks, it causes strokes, it causes the arteries of the body to stiffen, it causes obesity, it causes fatty liver. Fatty liver can go on to develop cirrhosis of liver. I've just simplified what insulin resistance is, and the trunk or the basic soil which allows diabetes to grow is insulin resistance. And when this tree sprouts and grows into a mighty banyan tree, the trunk might remain diabetes, which is visible from outside, but you can think of the various small aspects of diabetes as being the flowers, the buds, the fruit, the leaves, the shoots in the tree. And what are these associated or complementary diseases which happen with every case of diabetes? They are high blood pressure, high cholesterol levels or high lipid levels, fatty liver, which can of course proceed to develop into cirrhosis of liver, infertility in women, which we call polycystic ovarian disease, strokes, kidney failure, blindness, nerve problems, and an entire gamut of complications which is very unique to the syndrome of type 2 diabetes. So this concept of common soil is something which I try to promulgate in all the awareness programs that I do with the people from various walks of life, to talk about how diabetes actually impacts not only the individual but the society. So people come and ask me, my father is a diabetic or my mother has ischemic heart disease, so will I have it? The answer is not so simple, my friends. You see, when I always refer to the complex interplay between lifestyle and genes as a jar of pickle or the nimbu ka achar. You see, as a little boy, I've grown up in a small 3 BHK flat, and my mother used to make these delicious aam ka achar and nimbu ka achars, where she used to put some masalas and salt
and chilies and oil and either lemon slices or mango slices in a glass jar, and you used to seal it properly so that no water would go inside, and keep it in the sun. Now, depending on the hour of the day, she would either put it away from in the morning hours, the jar of the pickle would be away from the windowsill so that it could catch the oblique rays of the sun, and as the day progressed, it started coming, it was shifted more and more towards the windowsill, because of course the sun is more near the zenith. So we can think of lifestyle disease or the non-communicable disease as being a complex interplay between what is stored in the jar, what is there from inside, which we call our genes. Till such time that we do not do gene editing, we all have to be content with the genes we have from our parents, from our grandfather, from grandmother. You see, take out your old box of black and white photographs and compare how you look like in childhood, and compare your ears with your grandfather's. Chances are your nose will look like your grandmother's, your ears will look like your grandfather. And sometimes, when you take out these old pictures of 3 generations of people from the same family, you get confused. Who is who? Is the son the father or the grandfather? So this is because of the genes. This is a hermetically sealed container which contains the genetic material for all our bodily organ function. Now, genes are not the be all and the end all. We cannot change our genes, but we can change the environment around us. Now, what do I mean by environment? We can change whether we keep the jar towards the windowsill or away from the windowsill. What do I mean by that? So if you keep the jar of pickle near the windowsill, chances are your pickle will become faster, it will develop into a pickle faster. And if you move it away from the sunlight, then the pickling will take place slower. So there, my dear friends, is a real possibility you can delay, offset, and perhaps prevent lifestyle diseases. You have this hermetically sealed jar as your genes. So if your father is one of the Kapoors, you land up like Ranbir Kapoor. It's a genetic lottery, and you end up romancing Katrina Kaif. But if you're not, if you don't have that genetic lottery, then you end up with someone more plain looking like me. So this is a genetic lottery. You cannot change that. What you can change is how frequently you exercise, for example, how you change your environment, whether or not you are exercising on time, whether you are putting on weight or not, how much of complex carbohydrates you are eating, how much simple carbohydrates you eat, how much or how little oil you take, how much alcohol you consume, or whether you are a teetotaler, whether you smoke or you use tobacco products. Now, by changing the environment, you can delay and offset many lifestyle diseases. What do I mean by changing the environment? What are the healthy changes you can do to your environment? You can stop smoking, stop using all tobacco products, stop using alcohol as much as you can, exercise, please move your body, please don't sit, there are generations of people who are sitting on a chair and just typing away. So that is not one thing which is going to be very metabolically friendly for your body. If at all you have the genes to become a diabetic, the chances are you will pickle faster or you will turn into a diabetic faster. Now imagine somebody like I just cited the example of Ranbir Kapoor. Okay, so if he did not put his effort into acting, he sat in the house the whole day, you think he would have become a successful film star? Chances are no. So even with the proper genes, you have to put in that effort so that you can make the changes for the better or for the worse. So this is the paradox of the Nimbukachar, or the complex interplay between the genes and the environment. There was a lovely poem I'd read, or inspirational prayer I'd read. It has nothing to do with this talk, but it goes something like this, and I quote. It's a poem by the Alcoholics Anonymous, and they say, "Good Lord, give us the courage to change the things that we can, the serenity to accept the things that we cannot change,
and the wisdom to know the difference between the two. So there are a lot of things you can change. Please make positive changes to yourself. Please make positive changes to your environment. There are things you cannot change. You cannot change your ears or your nose. Even if you do cosmetic surgery, it's only cosmetic. But deep down inside, your genes are the same. And you have to know the wisdom to know the difference between the two. So 3 parts summarizes, in fact, it encapsulates a lot of the things we go about. The things we can change for better, let's do it. Let us be intelligent enough to know the things we change and the things we cannot change. And importantly, you have to have the moral strength and the serenity to accept the things that you cannot change. So that in a nutshell was about the complex interplay between lifestyle and disease. I hope the audience will benefit from it. Now, in this picture, you see a lovely, sadhya or a sapad. I'll not hide the fact that I'm a very, very big fan of, this typical banana leaf, sit down rice meal. I've had it many times in, my trips to Pondicherry and to various places down south. So this is basically, you have a main course. What is the main course? The main course is rice. That delicious white sticky rice that you get in Pondicherry or many parts in Tamil Nadu. So, and with that you have small number of accompaniments. What are those? Papadam, you have the banana, you have the neermor, you have the karakoram. So it's a lovely spread meal. So believe me, dear friends, diabetes is very similar to a set meal. So the main course is high blood sugar. Everyone talks about high blood sugar. We all know diabetes. Class 4 boy, you ask what is diabetes? Oh, I know diabetes happens because of high blood sugar. But the problem is even adults only talk about high blood sugar. That is the main course. And that's important because it is one of the easily available characteristics that you have about diabetes. But there are a lot of small accompaniments. You have rasam, you have sambar, you have karakoram. So those are the main actors in the beautiful sadhya that we eat. But there are a lot of other things. With diabetes, what are the small accompanying dishes? With high blood pressure, you have high cholesterol. With high cholesterol, you also have high blood pressure. And you have a little bit of retinopathy, which is retinal damage, a little bit of nerve damage, a little bit of obesity, a little bit of elevated fatty liver enzymes, a little bit of elevated creatinine. These are the small dishes which make up the set meal that we call diabetes. Now everyone's plate is not, even when you are sitting down for a lovely banana leaf meal, everyone's plate does not look the same. The composition of the rice varies according to the person who's eating it. So it keeps changing, which is why it is extremely important to understand that diabetes is not a single, it's a pack hunter. Which is why we need to control all the aspects of diabetes. And I talked about the common soil. Now I talk about the package deal or the, the set meal or the buy one get 5 free. So please understand, when you go back after listening to this lecture, please understand that diabetes is not a single disease, it's not a monolith, but is a very multifaceted, actor, just like Amir Khan. You have one Amir Khan of Dil Chahta Hai and you have one Amir Khan of Dangal. They don't look the same. But depending on which of these dishes plays up, you get a manifestation of disease. So if a person gets a heart attack, you could label him as a heart patient and you bundle him off to a cardiologist. No. If the patient gets a kidney disease, you would bundle him off to a nephrologist. Go and get your dialysis. No, that's not true. You have to target and treat a disease in its severity, in its absolute wholeness, and holistically target each and every aspect of diabetes. This is my single one take-home message for the audience today. So it's very simple. I have talked about why self-management education is important. You need to know what you are supposed to do, what you are not supposed to do. Diabetes and lifestyle I already talked about. Pharmacotherapy or medications is something which you need to take in accordance
And in collaboration, I use the word collaboration with your doctor, your physician, he's your friend. And this is very, very important. And I talked about the complications, nerve complications, retina complications. I talked about kidney complications. In Indian folklore, we never speak of for example, Govind, we never speak of Lord Krishna as a single entity. We always surround him either with Radhaji, or we surround him with the gopis, or with his dear friends from Vrindavan. So we always refer to Krishna Bhagwan as Radha Kishan, as Gopi Kishan, or we show him, illustrate him with Sudamaji. So that is why it is important for us to understand that diabetes also has a lot of friends. It has a number of friends which accompany this particular disease, and we have already talked about them. And that is why it is important for a person who has diabetes to realize that he or she could be suffering from one of these friendly diseases with diabetes. So please be on the lookout for the complications I already talked about. And it's important why someone should be educated about diabetes, because we can modify our needs, goals and life expectations according to whether or not we have any of these complications, what degree of flexibility you want, what kind of prescription you want, and what the complications are. And you have to have that skill and that knowledge and that attitude to deal with the various diseases and to troubleshoot when your doctor might not be available all the time. But to be forewarned is to be forearmed. We always talk about that. So it's very important for us to know. Having said that, it is also important to be careful about the Dunning-Kruger effect, which is beware of Googled information. People, rely on unreliable sources for information, and they suddenly, become experts, and they come with all sorts of printouts and they say, no, I can't take this medicine. This will cause this side effect. This will cause that side effect. And people who've been working in the field of, say, for example, diabetes or cardiology or nephrology for 15, 20, 30 years, they suddenly feel that, oh my God, why am I wasting my time? So, you cannot acquire information so acutely after 5 minutes of a Google search. You have to have the perquisite skills, the dedication and the experience to treat somebody with a very complex and multifaceted disease like diabetes. And like I talked about, diet is very important. So is pharmacotherapy or treatment, whether it's insulin or tablets. Lifestyle modification, one of the very important cornerstones of managing not only diabetes but other lifestyle diseases as well. And remember, they all need to work in concert. If they don't work in concert, then it's no use. So we need to have a sustainable working relationship with our physician. Doctors and patients are like playing badminton with each other, and they need to you need to return the serve. You can't play badminton alone, can you? It's not a single sport. So your doctor has to give you time, give you effort, think about you, have empathy. And what does the patient do? He has to follow the doctor, he has to exercise on time, he has to leave tobacco completely, he has to abstain from eating junk food and harmful food, alcohol, fried food, stuff like pizzas and burgers. And you have these mobile apps. You can just press a button and you can order a biryani at in the middle of the night. I was told at 12 midnight you can order a biryani. So in fact, if I'm not mistaken, one of the food app aggregators had said it's the most ordered food online. Imagine what India will look like if everyone starts eating pizzas and burgers and samosas and biryanis as a main food. The other problem I face is that I fail to comprehend why can't people carry their food. I carry my food like a good schoolboy. I carry my tiffin. My tiffin generally has rotis with nothing spectacular. I'm a poor man. Rotis with a little sabji, and I carry a little salad and fruit. So why can't you guys save money, man? Please carry your food, and I'm sure your doctor will be happy, your blood sugar levels will be happy, your cholesterol will be happy.
सो छोटे में बोले तो डॉक्टर जैसा बोले वैसा ही करने का. So with that, I won't bore you more. I end my talk here. Thank you for your patient listening and have a very happy and healthy year ahead. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much, Dr. Saab, for taking time out and sharing with us कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. टू स्टार्ट विद आई वांट टू आस्क कि लाइफस्टाइल का कितना बड़ा रोल है लाइफस्टाइल डिजीज में. देखिए, लाइफस्टाइल इज द लाइफ यू लिव 24 आवर्स अ डे. चाहे आप कैसे सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, बैठते हैं, उसके ऊपर सारा चीज़ निर्भर करता है. अगर मान लीजिए अगर आप सारे टाइम एक जगह चेयर पर मेज़ पर बैठे रहें, कंप्यूटर पे काम करें, तो ऑब्वियसली आपका बॉडी वेट बढ़ेगा. देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ, बच्चों को क्या हुआ, स्कूल में जाते जो बच्चे सारे टाइम जो खेलते रहते थे, गेम्स खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, उनके क्या हुआ, उनका वेट बढ़ना चालू हो गया. तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल एक्टिविटी जहाँ बंद होता है वहाँ पर मगर आपके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स आने चालू हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ना चालू हो जाता है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, आपके आर्टरीज हार्ड होने लगते हैं. और अगर आपके फिजिकल इनएक्टिविटी हो तो एक तरह से मानसिक एक तनाव भी आ जाता है, जिसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जिसको बोलते हैं आ जाता है. अगर जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक या जिम या कुछ भी करते हैं, देखा गया कि उनके मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन. जो हम एक्सरसाइज जब करते हैं तब ये निकलते हैं. दे आर द फील गुड हार्मोन्स. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ऐसा देखा जाता है उनको नींद भी अच्छा आता है. और एक जनरल एक मसल टोन, एक जनरल फिजिकल कंडीशनिंग ज़्यादा बेटर रहता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके कंपैरिजन में. सो लाइफस्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो मॉडर्न डे लाइफ पीपल आर गोइंग एंड जिमिंग एंड पबिंग एवरी वीकेंड. दे विल कंज्यूम 6-7 pegs ऑफ अल्कोहल, 10 सिगरेट पी लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरा फेफड़ा खराब हो गया, मेरा लंग खराब हो गया. तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा. अगर आप अपने हाथ से अगर आप अपने मैंने कहा बॉडी एक आपका, योर बॉडी इज़ अ टेम्पल, अगर आप उसमें गार्बेज डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तो खराब होगा ही होगा. हम लोग हमेशा एक मजाक से एक बात बोलते हैं कि ज़बान पे लगाम रखिए. आप क्या खाते हैं, क्या चखते हैं, क्या बोलते हैं, सब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, संयम रखिए. बिकॉज द टंग इज़ अ वेरी डेंजरस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. आई थिंक वन ऑफ the most dangerous organs in the human body, because it always wants to eat something unhealthy. It wants to taste unhealthy food, fried food. किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता है मगर मैं नहीं खाता हूँ. And if I eat in very small quantity in moderation. और मैंने कहा कि ये जो environment और genes का जो interplay है, this is very important. क्या ऐसी चीज करें हम जिससे एक मोटिवेशन आए. ऑब्वियसली डायबिटीज आपको है तो वो तो एक मोटिवेशन है कि इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं जी. लेकिन इसके अलावा कोई और मानसिक रूप से आदमी तैयार हो अपने आप को कि ताकि वो ये रोज एटलीस्ट एज यू सेड 5 days a week 150 minutes a week we should do at least some form of exercise. देखिए मोटिवेशन इज समथिंग विच विल कम ऑटोमेटिकली. आपको कुछ दिन आप करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. जैसे हम सवेरे रोज चाय पीते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, इट्स बिकम अ हैबिट. आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, वो आप है ना जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको आप 15 साल तक पैसे डालते जाइए. इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज जस्ट लाइक दैट. 15 साल तक तो आप बैंक से निकाल ही नहीं सकते, पर वो जब मैच्योर होता है तो आपके टैक्स वाले जो इनकम टैक्स के लोग हैं वो भी उसके ऊपर आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आपको बरकरार रखना होगा. आप एक दिन मान लीजिए एक आप चाहते हैं कि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ हो, आप एक दिन आएंगे उसमें 100 लीटर पानी डालेंगे और अगले 1 साल तक पानी नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं. रोज उसको सींचना पड़ता है. विशेष करके जब वो एकदम छोटा सा पौधा होता है उसमें थोड़ा पानी, थोड़ा सा उसमें सार, थोड़ा सा फर्टिलाइजर आपको हर रोज थोड़ा डालते रहना पड़ता है. और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो अपने आप इट बिकम्स इस्टेब्लिश्ड. उसको अलग से कुछ करने का आपको प्रयास नहीं करना पड़ता. वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट.
हमेशा ऐसे ही याद रखिए, इट्स अ स्मॉल सैपलिंग, आई वाटर इट फॉर अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, वंस इट टेक्स रूट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. जैसे हम लोग चाय पीते हैं या सवेरे उठ के अखबार पढ़ते हैं, वैसे ही इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. द नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद शर्मा जी का है कि डज प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ मेडिसिन्स डैमेज ऑर्गन्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है. अब आप दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हो सकते हैं. आपके घर में आप हमारे घर में लाइटर है जिससे हम सवेरे गैस को जला करके उसमें एक कप चाय बनाते हैं. या आपके घर में चाकू है, चाकू से क्या करते हैं, खीरा काट करके आप खीरे का सैंडविच बनाते हैं. अब उसी चाकू से आपका अंगली कट सकता है और उसी लाइटर से आपके पूरे घर में क्या, आपके पूरे बिल्डिंग में, पूरे कॉलोनी में आग लग सकती है. तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो द कॉन्वर्सेशन, द ट्रीटमेंट डज नॉट गो एनीवेयर फर्दर. आप रास्ता क्रॉस करना बंद कर दीजिए. कभी भी गाड़ी आपको दाएं से या बाएं से लाके आप मार सकता है. बिल्डिंग में रहना बंद कर दीजिए, कभी भी वो बिल्डिंग सिर के ऊपर गिर सकता है. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं. देर आर सम ड्रग्स विच आर मोर प्रोन टू डेवलप साइड इफेक्ट्स, बट आप रेगुलरली डॉक्टर के टच में, आपके फिजिशियन के टच में रहिए तो आपको एक मिला जुला एक, मैंने कहा ना ये बैडमिंटन का गेम है. आपको कुछ प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर को बताइए, उनसे सलाह लीजिए कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है. साइड इफेक्ट्स के बारे में आप खाली बात अगर करें तो ये सही नहीं रहेगा. इफेक्ट्स के बारे में भी बात करिए. वो क्या करता है, दवा क्या करता है. वो दवा आपको ब्लड शुगर को कम करता है, आपके रेटिना को बचाए रखता है, आपके किडनी को बचाए रखता है, आपके नर्व्स को बचाए रखता है, हार्ट अटैक प्रिवेंट करता है. कभी कभी अनफॉर्चुनेटली दुर्घटनाएं घटती हैं, ब्लड थिनर से ब्लीडिंग होता है, कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन से मसल्स में प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ शुगर की दवाइयों से शुगर ज़्यादा गिर जाता है. तो ये सब चीज़ें हमेशा रहेंगी, मगर आपको इसी के बीच मिलजुल के आपको रहना पड़ेगा. खाली साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर आप बात करिएगा तो आपका इलाज कहीं नहीं जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट. मूविंग ऑन, विनीता जी पूछ रही हैं कि कौन सी चीजें खाने से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. आपने जैसे टॉक में बात किया कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए. अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सी चीजें खानी चाहिए. अच्छा, ओके. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स आर वेरी गुड फॉर ऑल. हर बंदे के लिए अच्छा है. मैं ये नहीं कहता अगर आपके मान लीजिए पोटेशियम हाई है, जो बहुत कम लोगों के होता है, या आपके बहुत तेज आपके ब्लड शुगर है, उनके लिए नहीं. बट एज अ रूल, एज अ जनरल रूल, किसी को कोई भी बीमारी ना भी हो, फ्रेश फ्रूट्स सीजन में जो मिलता है, आपको अलग से आपको कोल्ड स्टोरेज का लाने का ज़रूरत नहीं है. फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनरिफाइंड ग्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अनरिफाइंड ग्रेन्स, मैदा नहीं गेहूं, और थोड़ा मोटा पीसा हुआ गेहूं, और चोखर को रखिए. गेहूं में कोई भी गेहूं हो, कोई भी तरह का सीरियल हो, उसका अब जो चोखर, जो हस्क, जो फाइबर होता है उसको छान के फेंक देता है. इसको मत फेंकिए. ये एक रामबाण दवाई है. ये आपको बीमारी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलोन कैंसर से बचाता है, मोटापे से बचाता है. प्लीज डोंट मेक द आटा रिफाइंड. कोई भी चीज़ में रिफाइंड लिखा हो खतरनाक चीज़ होता है. रिफाइंड किस लिए? नेचर में रिफाइंड कुछ नहीं होता है, सब चीज़ रॉ होता है. आटा खाइए बिना छाने, और चोखर समेत, जो फाइबर, जो हस्क जो बोलते हैं, ब्रान जो बोलते हैं, उसके समेत खाइए. दाल खाइए, अलग अलग बदल बदल के दालें खाइए. एक पर्टिकुलर दाल या एक पर्टिकुलर धान नहीं खाना चाहिए. एक दिन अरहर की दाल, एक दिन मूंग की दाल, एक दिन मान लीजिए मसूर की दाल, एक दिन लोबिया, एक दिन चना, एक दिन छोला, एक दिन राजमा. दालों को चेंज करिए, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स को चेंज करिए. उसी प्रकार जो सीरियल्स, जो आपके जो ब्रेड्स जो हैं, उसको चेंज करिए. खाली गेहूं मत खाइए. बेजड़ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, इसको आप चेंज कर करके खाइए. आपको इंडिया में सीरियल्स एंड लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स की कमी नहीं है. हम जितना चाहें खा सकते हैं. फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे बरबट्टी है, टिंडा है, लौकी है, परवल है, ये सब आप खाइए. जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, फिश खाइए. फिश में प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट डीप फ्राइड.
अगर आप एग खाना चाहते हैं, एग वाइट खाइए, एग योक को अवॉइड करिए जितना हो सके। और डीप फ्राइड कोई भी अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट को जितना हो सके अवॉइड करिए। वाइट मीट भी अगर आप खाते हैं तो उसको डीप फ्राइड या ऑयली प्रिपरेशन जिसको होता है वो उसमें मत खाइए, बट जितना कम तेल का प्रयोग कर सकते हैं कम तेल का प्रयोग करिए। मसालों में कोई बाधा नहीं है, अगर आपके पोटेशियम लेवल्स आर नॉर्मल तो मसालों में कोई बाधा नहीं है, जितना चाहे मसाले खा सकते हैं। तेल कम प्रयोग करिए। पर पर्सन 15 to 20 ग्राम्स ऑफ ऑयल एंड बटर कंबाइंड पर डे मैक्सिमम खाना चाहिए। तो आपके घर में अगर आप सिर्फ 2 जन रहते हैं तो 20 into 2 40 ग्राम्स, पूरे महीने में 1 kg 200 ग्राम से कम खपत होना चाहिए। घी, तेल, बटर, चीज़ मिला करके कम खपत होना चाहिए। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं, जितना कम तेल का प्रयोग करें उतना अच्छा है। डायबिटीज़ से ही नहीं आपको रिलीफ मिलेगा, बट आपके कोलेस्ट्रॉल, मोटापे से, हार्ट के बीमारी से, स्ट्रोक से, सब चीज़ से आपको निजात मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, ऑयल्स आर वेरी वेरी रिच इन कैलोरीज, और डीप फ्राई करने से वो एकदम मैदे का कोई चीज़ हो, कोई आइटम बने तो पूरा एकदम सोख लेता है तेल को, और वो आपके शरीर में जाके आपके आर्टरीज में जम जाता है। तो जितना हो सके इसको अवॉइड करिए। जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स या वनस्पति, उसको अवॉइड करिए। ट्रांस फैट्स होता है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे बिस्किट है, खाखरा है, जो बाजारू खाखरा मिलता है, घर का नहीं बोल रहा हूँ, उसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं। या सिंघाड़ा है, कचौड़ी, उसको खस्ता बनाने के लिए, उसको क्रिस्प बनाने के लिए शॉर्टनिंग एजेंट्स या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स बोलते हैं, वो यूज़ होता है, उसको अवॉइड करिए। ये सब मत खाइए। इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा करके खाइए। आगे बढ़ते हैं। केके साहब का एक सवाल है कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल एज डायबिटीज, और उनको तकलीफ होती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, यूजिंग स्टेयर केसेस। सो ऐसे पेशेंट्स को, स्पेशली इन दिस कोविड-19 लॉकडाउन्स, हाउ डू वी हेल्प देम, हाउ डू वी, व्हाट शुड वी डू? ओके, देखिए, मैं एक देयर इज अ लवली प्रेयर बाय अ ग्रुप कॉल्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उनका मैं कोट करना चाहता हूँ। इट्स अ लवली थिंग, यू कैन सर्च इट इमीडिएटली व्हाइल यू आर वाचिंग दिस शो। इट सेज समथिंग लाइक दिस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स। वो कहते हैं कि गुड लॉर्ड गिव अस द करेज टू चेंज द थिंग्स दैट वी कैन, द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट वी कैनॉट चेंज, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। हे ईश्वर, मैं जो जो चीज़ें अपने बारे में अच्छे के लिए चेंज कर सकता हूँ मुझे चेंज करने दीजिए। जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ उसको मेरे को साहस दीजिए, ताकत दीजिए कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। और इतनी मुझे क्षमता दीजिए, बुद्धि दीजिए कि मैं इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो मैं समझ सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी को सीवियर एस्मा है, उनको हम एक्सरसाइज करने, विशेष करके सर्दी के, जाड़े के सीज़न में बोलते हैं और हमें भी ख़राब लगता है, वो नहीं कर सकते हैं। आप एस्मेटिक्स के लिए रेगुलर जो कर सकते हैं, बैठे बैठा जो भी एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको करिए। अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज जो आपको जिम के कपड़े पहन के एक्सरसाइज होते हैं, एक तो वो एक्सरसाइज, वो सारे दिन भर में जो एक्टिविटी होता है वो करिए। जैसे फ़ोन में बात करते वक्त आप ऑफिस के अंदर या घर के अंदर चलिए, सीढ़ी 1 तल्ला या 2 तल्ला जितना चल सकते हैं चलिए। आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर कहीं जाना हो तो पैदल करके जाइए। अपने अलमारी को, अपने घर को जितना आप खुद सफाई करिए, किसी आदमी से मत कराइए, या आपके जो हाउस हेल्प्स हैं उनसे मत कराइए। तो ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग इज़ जनरली सेफ फॉर एस्थमेटिक्स, जब भी खुलेगा, वेदर परमिट करेगा तब आप कर सकते हैं। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स यू कैन, एंड अपने कैलोरी इनटेक को ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा चीज़ मत करिए, एक्सरसाइज मत करिए जो आपके फेफड़ों में तकलीफ दे या एस्मा में तकलीफ दे। ऐसा कोई भी काम मत करिए। अपने शरीर के अनुकूल, अपने लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू द इनर सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी एंड देन एक्सरसाइज। गौरवी घोष जी पूछते हैं कि मॉर्निंग वॉक बेटर है या इवनिंग वॉक बेटर है? ओके, देखिए, आप जब, अगर आपको मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। मॉर्निंग में आप जब उठे हुए रहते हैं, आप फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, उस टाइम अगर आप वॉकिंग करें तो आपके बॉडी में
वो जो स्टोर्ड जो कैलोरीज है उसको लिवर से निकाल करके बॉडी उसको प्रयोग करता है. इट हेल्प्स यू मेंटेन यूग्लाइसीमिया थ्रू आउट द डे. मॉर्निंग का स्ट्रेस फ्री थोड़ा पीरियड रहता है, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं. दैट इज द आइडियल टाइम. हैवी मील करके ऑफिस से आ करके एक्सरसाइज करना लोगों को जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. अगर आप कोई कारण से मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट I always generally prefer that people exercise in the mornings. So moving on, सावन टंडन जी पूछते हैं कि सॉल्ट कौन सा अच्छा है, सीधा नमक या आयोडाइज नमक? इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां चलती है, बहुत सारे मिथ्स हैं. Okay, let me tell you about one of the Indian laws. People are not aware of this. Sale, manufacture, distribution of non-iodized salt in India is a punishable offense. अगर आपके खाने में आयोडीन नहीं हो तो ब्रेन विकसित नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा. खास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर वो आयोडीन का सेवन ना करें, यहाँ पर तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता. हिली एरियाज में, दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ पर समुद्री नमक नहीं होता, आयोडीन डेफिशिएंसी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म. तो नॉन आयोडाइज सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. ये आपको आपके पैकेट में एक देखेंगे स्माइलिंग सन लोगो, स्माइलिंग सन लोगो रहता है. 15 पार्ट्स पर मिलियन एट द कंज्यूमर लेवल आयोडीन रहना चाहिए. ऑलवेज ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट. ये अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीज़ें अफवाह फैलाते हैं. आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड ऑलवेज बी टेकन बाय एवरीवन, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, स्पेशली पीपल हु लिव अवे फ्रॉम द कोस्ट. ये बात ध्यान में रखिएगा. और मैंने एक बहुत फनी चीज, मैंने एक चीज देखा कि ऑर्गेनिक हिमालयन सॉल्ट, मैं अपना पूरा केमिस्ट्री में आई विल फॉरगेट वॉट एवर केमिस्ट्री आई हैव रेड. सॉल्ट फॉर हेवन सेक इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. यू कैन नॉट हैव अ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट. सो सॉल्ट इज ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है, प्लीज टेल मी, आई डोंट नो अबाउट इट. जो हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो बोलते हैं, सेंधा नमक जो बोलते हैं, आई डोंट नो. Everyone should take the normal packet salt which has been iodized. This is actually a rule by the government of India. और कोई कारण है उसके पीछे. There is lot of myth about potatoes. आलू जो हम सबका फेवरेट है, कहीं भी फिट हो जाता है. हाँ. अब ये सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि पोटैटोज आर डेंजरस फॉर डायबिटीज, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अगर बॉयल पोटैटोज को कंज्यूम किया जाए तो उससे एज स्टार्च इज रिमूव्ड व्हाइल बॉइलिंग. सो क्या बॉइल्ड पोटैटो ओके है? कैन यू क्लियर दिस? देखिए, रूट्स एंड ट्यूबर्स आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे शुड बी हैड इन मॉडरेशन. जितना कम खाइए, whether it is boiled or baked or fried, you should eat it in the less quantity possible. No matter how it is cooked. कार्बोहाइड्रेट उसमें रहेगा काफी. Thank you so much, Dr. Saab. और before we sign off, I just want to, on behalf of FlexiSTRONG Talks, I want to thank you for taking time out and sharing your expertise on the subject.